Hello students, I am going to continue with the chapter Integration of 12th Standard, exercise 3.1, question number 3 and example number 6. So the example is I is equals to integration of sin 4x upon cos 2x dx. So see how to convert this sin 4x in the form of cos 2x. So you know the formula of sin 2 theta, that is the answer is 2 sin theta into cos थीटा. मतलब अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो उसका हाफ एंगल हम यहाँ पे लिखते हैं. वैसे ही अगर साइन 4 थीटा होता है तो ये 2 एज इट इज़ एंड जस्ट कंपेयर दिस वन. सो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ पे 2 थीटा होगा. सो sin 4 theta we can convert into 2 sin 2 theta into cos theta. Now I am going to put down this value here. So sin 4x we can write like this way, that is 2 sin 2x into cos 2x upon cos 2x. So this cos 2x will get cancelled, and so the remaining quantity is integration of 2 into I is equals to 2 into integration of sin 2x. तो हमें ये sin x करके कंसिडर करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x, एंड व्हेनेवर द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ c, दैट इज cos c आता है तो हम यहाँ पे माइनस साइन देते हैं. सो integration of sin 2x is cos 2x and the derivative of 2x is 2, and we have to divide this answer by 2, and this 2 is as it is. So 2 will get cancelled plus c, and so the answer is minus cos 2x plus c. Now see the next example, that is example number 7. So integration of root 1 plus sin 5x. So इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था तो हमने साइन 4x को ऐसे कन्वर्ट किया था इन द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x, वैसे ही हमें ये साइन 5x को कन्वर्ट करना है. तो कैसे हम कर सकते हैं देखते हैं. सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. मतलब ये 2 थीटा गेट कन्वर्टेड इंटू हाफ एंगल. सिमिलरली दिस 5 थीटा विल गेट कन्वर्टेड इंटू हाफ एंगल. सो 2 sin 5/2 थीटा इंटू कॉस 5/2 थीटा. एंड यहाँ पे जो 1 है वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ 1 इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो वी रिप्लेस दिस 1 बाय दिस आइडेंटिटी. सो एग्जाम्पल में x है, सो वी गोइंग टू राइट डाउन इट. नाउ सी यहाँ पे थीटा मैंने लिखा है, मतलब यह दोनों एंगल सेम होने चाहिए, बट हमें जो एंगल चाहिए वो ये एंगल है, दैट इज़ 5/2 थीटा. तो ये रिप्लेस करके हम 5/2 x करके लेंगे यहाँ पे. सो साइन स्क्वेयर 5x/2 प्लस कॉस स्क्वेयर 5x/2 प्लस 2 साइन 5x/2, ये जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इंटू कॉस 5x/2. नाउ दिस इज द एक्सपांशन ऑफ साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2 ब्रैकेट स्क्वायर. मतलब अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो हमें ये जो क्वांटिटी है वो मिलती है. तो just we going to check this. So the square of the first term, that is sin square 5x/2, then the product of these two quantities and its double, so you get this term, and the last one, that is the square of this term. So after getting the square root, because यहाँ पे square है and the quantity is in square root, so the square root get removes and we get sin 5x/2x. just we going to separate these two quantities, and for second one, that is cos 5x/2 dx. ये दोनों क्वांटिटीज़ हमने सेपरेट किया. नाउ वी गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. हमें ये कंसिडर करना है कि ये टोटल एक्स ही है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज़ माइनस कॉस 5x/2, एंड ये जो 5x/2 है उसका डेरिवेटिव हम लेंगे, वो आएगा 5/2. उससे हम इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 5/2. डेरिवेटिव में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम उसको डिवाइड करते हैं. आफ्टर दैट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x/2, दैट इज़ नथिंग बट द sin 5x/2, and the derivative of 5x/2 is 5/2, and we are going to divide it. अब ये क्वांटिटी हम न्यूमरेटर में लेंगे तो ये आएगा -2/5 cos 5x/2. सिमिलरली ये भी वैसे ही होगा, दैट इज़ 5/2 sin 5x/2. नाउ वी कैन टेक कॉमन दिस, एंड 2/5 is common, and so we are going to write down the first positive quantity, so sin 5x/2 minus cos 5x/2 plus c. This is the answer. Now see the next example. In this example we solve, that is root 1 plus sin 5x.
I am going to give you one example for your homework. It's not from the exercise. Integration of root 1 plus sine 3x. Instead of 5x, there is a 3x. Now this example is for your homework. You have to solve this example similarly with that type of this example. Now see the example number 8 from the exercise. Integration of cos square x dx. Now see, there is no any formula for integration of cos square x. So here we have to find out some alternatives for this for this example. So you know the formula of cos 2x, which is 2 cos square x minus 1. So from this formula we are going to find out the value of cos square x. तो ये -1 जो है वो यहाँ पे जाएगा. सो विल गेट हियर 1 प्लस cos 2x एंड वी ऑल्सो रिमूव दिस 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे जाके वो डिवाइड होगा. सो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos square x. नाउ वी गोइंग टू remove this quantity using this formula, that is 1 plus cos 2x upon 2. So 1 plus cos 2x upon 2. Now we are going to take this quantity, that is half, outside the integration. So half in bracket we get 1 plus cos 2x dx. So now we are going to separate these two terms. So integration half is outside the bracket. So we are going to give it to each term. So half इस इंटीग्रेशन के बाहर भी आएगा एंड व्हेन वी सेपरेट दिस cos 2x ये हाफ जो है वो इधर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx. सो वी गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस हाफ. सो द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, वी कंसिडर दिस 2x एज x एंड सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x. 2x हमें ऐसे ही लिखना है एंड आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज नथिंग बट 2 एंड जस्ट डिवाइड इट. सो sin 2x अपॉन 2. सो आफ्टर दैट वी कैन राइट इट लाइक दिस वन, दैट इज x बाय 2 प्लस हाफ. ये 2 भी हम न्यूमरेटर में लेंगे. सो अगेन हाफ sin 2x प्लस c एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट x बाय 2 प्लस sin 2x अपॉन 4. 2 to 4 एंड प्लस c. आफ्टर दैट यहाँ पे हम 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं. सो टेकिंग 1/4 आउटसाइड द ब्रैकेट, ये जो टर्म है वो हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ 2x प्लस sin 2x प्लस c. अगर आप यहाँ तक फाइंड आउट करते हैं तो भी करेक्ट है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया था सो इसलिए मैंने 1/4 कॉमन लिया है. यहाँ तक भी आप फाइंड आउट करते हैं तो वो भी करेक्ट है. इसी टाइप का जो एग्जांपल है, दैट इज़ यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड आउट किया था. एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x. सो कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताती हूँ. इट्स नॉट फ्रॉम द एक्सरसाइज, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर योर होमवर्क. क्या वैल्यू आप पुट डाउन करेंगे. सो यू नो दो देर आर 3 फॉर्मूलाज फॉर द cos 2x, one of which is 1 minus 2 sin square x. From this you can find out the value of sin square x. सो ये यहाँ पे मैंने ले लिया. तो 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x. नाउ मूव दिस 2 टू दिस साइड. सो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. और ये एग्जांपल सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 dx. सो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं हमें दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ अ बायनोमियल. सो वेन एवर यू सी द बायनोमियल 99% यू हैव टू यूज़ द कंजुगेट पेयर ऑफ दिस वन. सो कंजुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, हम यही क्वांटिटी लिखते हैं लेकिन साइन अपोजिट लेते हैं. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द एग्जाम्पल बाय इट्स कंजुगेट पेयर. सो 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3. So we are going to multiply it with the conjugate pair, multiplying and dividing. So there will be no any change in the example. So root x plus 3. So यहाँ पे हम उसको multiply करेंगे. So taking 2 outside in bracket will get root x plus 3. So there is a formula we can see, that is a plus b and a minus b. So the expansion is a square minus b square. So whenever we take the square of the root x, so we'll get here x minus the square of this root x plus 3 is only x plus 3. Now we are going to open this bracket. So to integration of root x plus 3 upon x minus x and minus plus minus 3. So x will get cancelled
and finally we taking this minus 3 outside the integration. So minus 2 upon 3 integration of root x plus 3 dx. Now we are going to separate these terms. So minus 2 by 3 is as it is, and integration of root x dx we put in the bracket for this one because this minus 2 by 3 is for both the terms. And here यहाँ पे प्लस था, सो प्लस माइनस माइनस, एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस रूट एक्स प्लस 3 dx. So integration of, we just going to remove this root, so there is a power of half, and यहाँ पर भी half. Just we remove the square roots and taking the power as a half, and now we taking the integration. So we going to use the formula of x raised to n, and the answer is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So half plus 1 upon half plus 1. Similarly half plus 1 upon half plus 1. So finally we get the answer, that is minus 2 by 3 outside the bracket, and x raised to, yes, 1 plus half, it is 3 by 2 upon 3 by 2. Similarly minus x plus 3 raised to 3 by 2 and 3 by 2 plus c. Now we the denominator for both the quantities is 3 by 2, so whenever we going to take it in the numerator it becomes inverse. So 2 by 3 we are going to take common, so minus 2 by 3 into this 2 by 3, in bracket we get x raised to 3 by 2 minus x plus 3 raised to 3 by 2 plus c. Now this 2 into 2 we get 4, and 3 into 3 that is 9. So x raised to 3 by 2 minus x plus 3 raised to 3 by 2 plus c is the answer. Now see the example number 10. So integration of 3 upon root 7x minus 2 minus 7x minus 5 dx. Again we see here the, now here we also see the binomial. So here we are going to use the conjugate pair of this one. So just taking the plus sign, and we are going to multiply and divide the example. So here we get the, we taking this 3 outside the integration, and numerator is as it is. And since here we see the product of a plus b and a minus b, so the answer is a square minus b square. So if we take the square of this one, so we'll get 7 minus, just I am going to write here, that is root 7x minus 2 square minus root 7x minus 5 square. So after that we remove this square root, so we'll get here 7x minus 2 minus 7x plus 5, because minus minus plus. So 7x will get cancelled, and so here we get minus 2 plus 3, that is 3. So this 3 cancel with this 3, and we get root 7x minus 2 plus root 7x minus 5x. Now we are going to separate these terms, and side by side we are going to take the square root. So we are going to remove the square root. So integration of 7x minus 2 raised to half dx plus 7x minus 5 raised to half, and we get here, that is half plus 1, that is n plus 1 upon n plus 1, and the most important thing that we have to take the derivative of this term. So the derivative is 7, and so we are going to divide it, and for second term we have to also do the same, that is 7x minus 5 raised to half plus 1 upon half plus 1 is as it is, and the derivative of this quantity is 7, so we are going to divide it. So the last step in this example we get, that is 7x minus 2 raised to 3 by 2, 7 plus 3 by 2. Similarly same here we get, that is 7 into 3 by 2. So totally we get, that is 7 3s are 21 by 2, यहाँ पर भी 21 by 2. So we take it in the numerator, and so we get here 2 upon 21. We write it, that is 7x minus 2 raised to 3 by 2, and the same here, that is 2 upon 21, and this quantity is as it is. Here we can take the common, that is 2 by 21 we take it as a common, and the remaining quantity is as it is. So here is the end of the question number 3, and we are going to start with the question number 4. So f dash of x is equals to x minus 3 upon x cube, and f of 1 is equals to 11 by 2. Then find the f of x.
तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव दिया है और एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है, दैट इज़ 11/2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एफ ऑफ एक्स. So you know it very well, that is if we are given the function that is f of x, and if we take the derivative, so we get here that is f dash of x, and if we take the integration of this quantity, then we get the f of x. So we write it this like this way, that is f of x is equals to integration of f dash of x. मतलब हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें f of x मिल रहा है. तो f dash of x हमें दिया है एग्जाम्पल में, that is x minus 3/x³. So we going to put down the value here. So f of x, we going to separate the terms. So if integration of x dx minus taking 3 as a common, integration of x raised to minus 3 dx. So f of x is equals to taking the integration, that is x square upon 2. That means यहाँ पे 1 है, so we using the formula of x raised to n. So the answer is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Similarly here, that is n plus 1, that is minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus c. So x square by 2 minus 3 x raised to minus 2 minus 3 plus 1, that is minus 2 upon minus 2 plus c. So x square by 2 plus 3 by 2, so this minus minus become plus, and 3 by 2 we write it as this one, and we going to make it positive, so we get here 1 upon x square plus c. Now we say it is a star equation because we have to find out the value of c. So whenever we find the value of c, then and then we can find the f of x. So in this example we are given the value of f of 1, that is 11/2. So we going to write it, that is f of 1 is equals to, हमने यहाँ पे फंक्शन फाइंड आउट किया है, that is x square by 2. So we going to put down the value of x as a 1. So 1 square upon 2 plus 3 by 2, 1 upon x is 1, so 1 square plus c is as it is. And you know the value of f of 1 is 11/2, so 1/2 plus 3/2 plus c. And here we take the LCM, so the LCM is 2 and 3 plus 1, that is 4, and यहाँ पे 11/2. Now we have to find out the value of c, so move this quantity to this side. So 11/2 minus 4/2, so here we get 7/2. So this is the value of c, and now we are going to put down this value of c in the star equation. So f of x is x square by 2 plus 3/2 x square 1 upon x square plus the value of c is 7/2. So this is all about the exercise 3.1. So in the next lecture we are going to start with some new formulas and exercise 3.2a, because you know that is there are 3 parts of exercise 3.2, that is 3.2a, 3.2b and 3.2c. So in the next lecture we are going to start with some new formulas, some corollaries, and we have to start with the exercise 3.2. Thank you.